ओके ऑलराइट गाइस। अब रेंडर वगैरह हमने कर लिया था, एक फ्रेम के दो आउटपुट्स निकाल लिए थे, अल्फा और एक आपके पास ओवरऑल विद बैकग्राउंड था. So let's dive into it and see how can we improve it further on and see how can we increase the details of it. So अच्छा, यहाँ पर मास्टर कॉम्प एच डी है, ओके एल क्यू है, शॉर्ट टू, इसको मैं फुटेजेस में डाल देता हूँ, प्री कॉम्स में डाल देता हूँ. Okay, so where are we? In the textures, in the LD, shot 2, output, और ये दोनों हमने import कर लेने हैं. ठीक है, I will just create a new composition for them. ठीक है, we have this frame. अच्छा, मैट मैंने इसलिए निकाला था कि मैं इसको अल्फा कर दूंगा. So let's just do that. आफ्टर इफेक्ट्स 2023 में यू हैव एन ऑप्शन कि आप ट्रैक मैट करने के लिए आप बस पिक विप करें और इसको सेलेक्ट कर लें जिस लेयर को आपने ट्रैक मैट करना है. ठीक है. Okay, so we have done it. Let's just create a background image. ठीक है, ऐसे भी हो सकता है. और we can also do one more thing कि अगर मैं इसी का डुप्लीकेट पीछे रख लूँ और इसको मैं नन कर दूँ, so you will have that as well. और मैं इसको फिर मैट करवा दूँ और इसको मैं इन्वर्ट कर दूँ. कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट? सो लेट्स जस्ट नॉट डू दैट. इसका अलग ही बना लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग थिंग्स सिंपल. Ramp. Ramp means gradient in the language of After Effects, and I don't really want too much of darkness. Okay, it's not Gotham. Okay, just a bit. Okay, and let's try that. ठीक है, ये एरिया लाइट हो, ये एरिया डार्क हो, इसको मैं स्वैप कर देता हूँ. डार्क को मैं बहुत ले ही जाता हूँ डार्कनेस पर. ठीक है, और इसको रैम्प स्कैटर कर देता हूँ. सो यहाँ पर आप जो वो देख रहे थे लाइंस, देख रहे हैं यहाँ पे लाइंस आ रही हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी द मोर यू स्कैटर इट. ओके, सो वी हैव अवर सेटअप. ये फुल पर आ रहा है. लेट मी जस्ट increase this a bit. Okay, we have this now. It does feel nice, I guess. सही लग रहा है देखने में, but anyway, let's just try things out. Okay, ये है for example हमारा iPhone Pro, maybe Ultra HD or something, high quality camera. क्या लिखना चाहिए? Ultra. बाय द वे ये एक्सटेंडर फॉन्ट है, ये मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो ये डायरेक्टली खुल गया. वैसे नॉर्मली यू कैन जस्ट पिक द प्योर रेफरेंस और उसमें से देख लें, उस हिसाब से आप फॉन्ट वगैरह सर्च कर लें. ओके, सो अल्ट्रा व्हाट वाइड, आई डोंट नो, I'm just writing a placeholder text, फिर मैं कोई मीनिंगफुल चीज़ लिख लूँगा. Maybe I have an idea of how what can I say. क्या क्या आपने स्क्रिप्ट में क्या देखा था? Let's just see. अब मुझे स्क्रिप्ट दोबारा खोलनी पड़ेगी. अच्छा, we will get back to that. Okay, let's just focus on this placeholder thing. Let's try ramp effect here. थोड़ा सा इसको भी हम डार्क रखते हैं. ठीक है, और let's just make it here. इसको नीचे भी ले आते हैं. ठीक है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ. So now you see it does give a bit of a dramatic effect to it. इससे भी रैम्प लगा देते हैं. ग्रेडियंट रैम्प कॉपी किया, ग्रेडियंट रैम्प पेस्ट किया और यहाँ पर आ गए, फिर इसके पास आ गए. See, although guys, I do want to mention that I know these tutorials are not that much high quality in terms of recordings and stuff, because I was trying to create a proper setup for them, but it would take a lot of time, and
the whole series is also going to take a lot of time. So if I would have waited for that, I wouldn't have completed it till today. Okay, अच्छा अब देख रहे हैं यहाँ पे मैं ये बनाना शुरू तो हो गया हूँ. It looks really nice, but the whole the क्या कहते हैं, the phone doesn't really match with the vibe of it. So maybe I don't really want the wallpaper, because it's not an ad about the wallpaper of the phone, and this shot is not about the wallpaper of the phone, because the wallpaper is getting all the attraction out of it. So the इस shot का मकसद ये है कि आपको डिज़ाइन का एक छोटा सा एक gist मिल जाए, just the gist of it, ठीक है, and then we move on with the other shots. So let's go back into the Cinema 4D and go into the screen section and just remove the emission part. ठीक है, इसमें भी मैं वापस आता हूँ and I will just remove the alpha channel. इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है, and I will just go into the diffuse. इसको मैं reset to default कर देता हूँ. Yeah. So now I want it to look more dramatic. जैसे ही मैंने ये ऑन किया मेरी स्क्रीन ग्रीन होना शुरू हो गई, so please don't mind about that. Okay, so again, it doesn't look really dramatic, right? So let's just go back. So that's how you go back and forth and figure out the right thing. At least that's what I do. And इसी तरह होता है जब you're working in a production house, you go back and forth with the creative director. He gives you notes and things like that. ठीक है? So let's just say कि let's just open up the camera only. Okay, and in this section, let's just go into the camera imager and see exposure किस तरह से इसको बेहतर कर सकता है. और let's think about the minute. Maybe not. Strength बढ़ाते हैं. So you see, the whole idea is to reveal the body of the phone, not the sorry, ये camera बहुत ऊपर हो गया. Not the whole display and anything like that. Okay, so let's try this. Okay, one more thing I would like to say कि ये देखना, ये इसकी जो perspective lines है ना, ये बहुत interesting नहीं लग रही है, बस सही है. बहुत dynamic angle नहीं आ रहा, मतलब बहुत जो एक diagonal line होनी चाहिए ना, ये बहुत flat सी line आ रही है. Let's see if we change the classic to wide angle. Okay, oh ये क्या लगा हुआ है? खैर वो एक अपने ये जो globe लगाया हुआ है, let's just go back to it, LD, और इसको ऊपर भी हम ये tag लगा देते हैं, just for the sake यार नज़र नहीं आया कुछ भी. ठीक है. Okay, camera वापस आ जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, and if we zoom in again, because we have already a backup camera, I'm really sure that whatever I do I will not mess up the whole thing. At least that's what I think right now. Okay, camera attributes, or in the camera coordinates, let's just so I want this diagonal line to be more and more diagonal. ठीक है, तो ये देखें पहले से बहुत diagonal हो गई है, मतलब diagonal से मुराद this needs to be a more of an angular line, these two lines. Okay, so let's do one more thing. Okay, if I have a wide angle, let's just go super wide. Let's see how much diagonal line we can get from this. You see, it is giving us a diagonal line, but you see it is messing with the whole design of it. ये पूरा stretch कर देता है. So I don't think we really want that. Let's just not go wide. Let's just go let's try portrait. Let's try that. Why not? Let's try portrait. Okay. Yeah, I think I like the portrait one better, because you see it really gives out the whole cubical shape of the design itself. Yeah, maybe I will keep it. Okay, let's just zoom out a bit more.
Yeah, I think this looks fine. This looks fine. और मुझे विनियट नहीं चाहिए अभी, इसको मैं कटा देता हूँ. I just not use it because हम लोग वो कॉप में लगा देंगे. Okay, मुझे ये देखना यहाँ पर ये edges बंद हो जाते हैं पूरे. I really don't like this part कि यहाँ पे ये edges खत्म हो जाएं. Let's just increase this thing and see if we can get this edges back. Right, now we are talking. Okay, in this screen I'm still not sure क्या करना चाहिए यहाँ पर. Let's just try different stuff. Maybe let's just try a gradient. Let's just try, maybe we can just एक खूबसूरत idea. Let's try one more thing कि हमारे पास screen normally क्या होता है? Screen is a reflective surface, right? So let's just make it a reflective surface. कैमरा बंद करता हूँ, एनिमेटेड मैश ऑन करता हूँ, अंदर आता हूँ, इसको कैमरा बंद करता हूँ, फिर स्क्रीन मैश में आता हूँ. यहाँ पर लेट्स जस्ट रिमूव इट फॉर नाउ. यहाँ से डिलीट नहीं करना है, सिलेक्शन यहाँ से बना के डिलीट करनी थी. ओके, सो ऑब्जेक्ट्स एच डी मटीरियल्स क्रिएटेड लाइट्स स्पेकुलर जैसी बना, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया आउटर क्लास पर. नाउ यू कैन सी दैट इट लुक्स रियली what? It looks really black. We need some reflections on it, right? So let's create some reflections. So how can you do that? It's really simple. You can just create a plane. Okay. Wow, एक plane भी cool लग रही है अब इस वक्त. I didn't see that coming. So we just need a reflection, right? Okay, so now it will start looking a bit off, maybe not. Okay, so now what we need to make it a bit more reflective surface. So let me just duplicate this diffuse. ठीक है, कहाँ गया? यहाँ पर है और इसके ऊपर लगा देता हूँ और फिर यहाँ पर आके, because this is way more reflective that it needs to be. डिफ्यूज में बंद कर रहा हूँ, एमेजन में आता हूँ और इसको मैं बंद करके देखता हूँ. डबल साइडेड. ओके, यस, that's how it should look like. Subtle सी रिफ्लेक्शन, that's all I want. और इसके ऊपर मैं टैग लगा दूँ. अच्छा, ये कहाँ जाएगी? ये LD में जाएगी. सो ऐड टू लेयर, LD, सेव इट. LD वो गायब इसलिए हो गया क्योंकि हमने LD ऑफ किया हुआ. Okay, I think let's create an output out of it. और इसका मैं बंद करता हूँ और कैमरा LD बंद करता हूँ, कैमरा बंद करता हूँ, नहीं LD खोलते हैं, बाकी सब बंद करते हैं. ओके, सो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ये टैग लगा देना है. Okay, so let's render it. Let's render it and get back to the thing which we were working on. अच्छा, अभी मैं एक काम ये करूँगा, अभी मैं एक काम छोटा सा ये करूँगा कि because I'm just cropping this whole thing. ठीक है, let me just कहाँ गया कैमरा? कहाँ गया कैमरा? ये in the bloom section I think I will have to do some, you know. ये क्या हुआ? ये कैसा bloom हो रहा है? मुझे लगता है मैंने जो ये surface लगाई है ना, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये कैमरा के सामने है शायद. आई थिंक मे बी. Yeah, I really don't know why is it looking like that. अच्छा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. मैं एक्सपोजर की सेटिंग्स ऑन कर रहा था, मुझे ब्लूम की सेटिंग्स देखनी है. और मैं कट ऑफ बंद करता हूँ फॉर नाउ. Yeah, I don't really like this. Let's just off it. Okay. So ये रेंडर हो गया है. सेव इमेज और PNG VO2. So इस तरह से ये VO2 हो जाएगा. इसी तरह से आप इटरेशंस करते रहेंगे, राइट?
ओके सो सेव हो गया है, इसको मैं यहाँ से रोक देता हूँ, फाइल को भी एक इंक्रीमेंट सेव दे देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेहतरी मे बी। Let's just import the VO2. You see it already looks a bit dark. Okay, so VO1 को मैं replace करवाना चाह रहा हूँ इस layer को इस layer से, ठीक है। So how can you do that? You can just simply select this. ये क्या है, यहाँ पे PNG sequence आ गया। So make sure कि जब आप यहाँ पे sequence wise कोई चीज़ रख देते हैं ना तो वो PNG sequence पे tag आ जाता है, ये off हो। VO2 ओके और मुझे इससे रिप्लेस करवानी है। सो अच्छा मैं एक काम ये भी कर लेता हूँ कि मैं और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये FX कंसोल है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम वीडियो को पायलट, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट अलाउज यू टू डू अ फ्यू मोर थिंग्स देन दिस। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल स्पेस बार करके यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, जस्ट सो दैट आई नो कि भाई ये पहला पास ये था, ठीक है। ओके सो VO2 मे बी वी कैन डू वन मोर थिंग कि अगर ये VO1 का मैट है, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ ताकि मेरे पास ये सेव रहे और आई कैन जंप बैक एंड फोर्थ। और VO2 बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड स्टफ, ठीक है। Okay, this looks way dark. I don't know why this looks way dark. Oh, क्योंकि ये मर्ज, क्योंकि कट ऑफ हो गया इससे और इसका जो एंगल था वो डिफरेंट था, क्योंकि हमने कैमरा एंगल भी चेंज किया तो वो मैच सही नहीं हुआ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो जस्ट ये क्या हुआ, ये क्यों नज़र नहीं आ रहा। ओके ये ऊपर आएगा सही, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेडियंट रैम्प, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसी तरह इसका भी जो डार्कनेस है वो मैं बैकग्राउंड की लगा देता हूँ, जस्ट इट लुक्स फाइन। इट डज लुक नाइस। तो थोड़ा सा मुझे लगता है स्केल डाउन हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या की जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा ही इसको डार्क कर दिया है कलर्स को, ये दे जस्ट नीड टू बी यू नो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डार्कनेस टू इट, ठीक है। थोड़ा सा ये कट भी सकते हैं जी। अच्छा अल्ट्रा वाइड, okay so it doesn't look half bad, ठीक है, it doesn't look half bad but it's not still there yet, so let's just get back to the references and see and study more and more. Okay, so if we come back to these sort of references you will see कि यहाँ पर देखने छोटे छोटे कुछ boxes हैं जो कि और premium look दे रहे हैं, so let's just create these things as well। okay, पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं white कर देता हूँ, I don't really like the way they are looking right now, ठीक है। ये हो गया। नाउ आई नीड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ इट बिकॉज आई डोंट रियली मे बी, चले फिलहाल इसको जाने देते हैं इसी तरह। ओके सो व्हाट शुड वी डू, या वी कैन डू वन मोर थिंग कि अगर मैं इसके ऊपर एक छोटी सी आउटलाइन बना दूँ, दिस विल लुक नाइस, बट वो एक एडिशनल चीज़ है वो हम करेंगे मूविंग ऑन। सो वी जस्ट नीड टू क्रिएट सम HD display, let's type that and see कि हम ये छोटा सा पार्ट कहाँ लगा सकते हैं। ओके और ये भी composition भी से भी खेला जा सकता है, I mean you know we can just और ये भी किया जा सकता है if I go to proportional grid। अच्छा proportional grid हो सकता है आपका ऐसा नहीं आ रहा हो, मैंने इसको setting यहाँ से change किए preferences, grids and guides, and from there you can select horizontal 3x3, ठीक है। So I like working in this grid।
You can see that this is more closer to the lower thirds. नहीं, क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गया मैं. Rule of thirds, right? Rule of thirds. Man. Okay, so if I remove it, you will see it थोड़ा सा इसमें स्पेस देते हैं, थोड़ा सा इसको ये तो इसका अंदर, इसको भी अंदर, ठीक है. और नाउ लेट मी जस्ट इसको फिलहाल मैं बस मास्क कर देता हूँ क्योंकि ये प्रीव्यू है, ये यहाँ पे अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशंस चल रही हैं. वी आर नॉट रियली गोइंग टू डू एनीथिंग हियर. ठीक है. Okay, it does look fine. But it doesn't look half bad. Okay, so let's try to add some some elements to this thing. So थोड़ा सा ग्लो वगैरह भी ऐड करते हैं. तो let's create adjustment layer. Control Alt Y से आ जाएगी and looks यूज़ करते हैं. ये ट्रैप कोड का प्लगइन है. ट्रैप कोड मैजिक बुलेट लुक्स का प्लगइन है. You can search for it and download it. Okay, right giant magic bullet looks. Okay, so in the edit section you can go and add some glow effects. I haven't saved it, so maybe it will crash. Okay, so I don't really want to go through all these things because I don't really need them. मुझे जो चाहिए वो है, सो मैं यहाँ पर लाऊँ, टूल्स में आऊँ, ऑप्टिकल डिफ्यूजन, दैट्स व्हाट आई वांट, एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर नाउ. लेट्स जस्ट सेव इट. सी it can create some good highlights to the whole thing. ठीक है. मुझे लगता है रेंडर बहुत ज़्यादा हाई रेज नहीं हुआ है, तो ये देखें यहाँ पे पिक्सल्स आ रहे हैं. ऐसे ही 200 किया हुआ मैंने, फिर भी पिक्सल्स आ रहे हैं. ओके, सो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा अगेन. But anyway, it looks fine for preview purposes. Okay, overall composition looks a bit how should I put it, bit foggy or dull. Let me just bring down the strength of it. ठीक है. Now I'm just इसको मैं कह देता हूँ कि glow effect. ठीक है. Control Alt Y press करके I will just use some curves, and I know I am using some plugins here and there, but these are the plugins which you will need to eventually, because once you start working professionally you will need these kind of things. I can show you guys some plugins or some way around जो कि इसके बगैर हो जाए. ठीक है. But at the end of the day you will need them, so why not try to buy them or use them in trial, or just get them from the beginning anyway. Okay, let me save it first. Okay. Hue saturation, so let's bring it up to 30%. Unsharp. ठीक है. Alt स्पेस बार प्रेस करें, जो भी लेयर सेलेक्टेड होगी उसके ऊपर जो भी आप टाइप करेंगे वो आ जाएगा इफेक्ट. ओके, इट डजंट लुक हाफ बैड. अच्छा, ये है कौन सा फ़ोन? हो सकता है हम यहाँ पे कोई इसका लोगो शोगो लगा दें. दैट विल डू. मे बी let's just get back to the references. So we were talking about these kind of things, future high tech Oppo X. So where can we do this stuff? Once if I talk about this composition, it looks like this right now. Okay, well, wait. Okay, let me just do this. ठीक है. एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, जो मुझे नज़र आ रहा है. एक ऐसा बॉक्स है,
ठीक है, और एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा. So you see, it looks more like this, sort of. So it doesn't look bad. The reason why I'm showing you guys this is, इसको मैं थोड़ा सा बेजियर पाथ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसके पाथ सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, डबल यू प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. Okay, so let me just give you guys a quick overview of how I see this composition. यार, okay, so as you can see, ये composition कुछ इस तरह की है जो कि overall आपको visible नज़र आ रही है. ठीक है, so this is the whole composition. Let me just ये भी थोड़ा सा diagonal हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा diagonal हो जाएगा, कर ही देते हैं जब यहाँ तक आ गए. ठीक है, कुछ इस तरह की कॉम्प ये है, ये भी डायगनल है. ठीक है, so it looks like this. However, once you see this, so it's a big chunk of shape. So the reason why I created this, it looks like a big chunk of one shape. It shouldn't be like that, okay? क्योंकि सिर्फ जब आप देखते हैं ना नेचर में भी, तो you see if a mountain or a rock, let me just give you guys an example of it. So anywhere you see, कोई सा भी खोल लेते हैं, maybe I think this is a good example. You can see that there is a big shape, ठीक है? Then there are some smaller shapes. दो बड़े shapes हैं, कुछ इससे छोटे हैं, और कुछ ये तो इससे भी छोटा है. You see, so there are some big shapes, or some medium shapes and some small shapes. And together they are making us believe that they are believable, they are natural, they are more pleasing to our eye. ठीक है, you see this picture and you believe it. ठीक है, तो इसी तरह because we have seen so many things like that in nature, अब वो design में भी आ जाएगा, तो it feels more natural and more appealing to us. However, if we see here we see just one big rock. Okay, so we need some small rocks, some medium rocks, and things like that. But I'm not saying कि ऐसा हर जगह होगा. It's not important. It depends on the composition and the project you're working on and the requirements of it, obviously, because we are exaggerating things here. So maybe if we can create some things here, and some things here, just to balance things out. So let's see how it works there. So I don't know. Let's create an X. ठीक है, X बनाने के लिए मैं एक ग्रिड ऑन कर देता हूँ. ठीक है, और यहाँ पर X बनाने की जरूरत है. X तो टाइप हो सकता है. या अल्लाह, कैसे होगा? Okay, so let's no lemon milk. I think this will do. This will do nice. ठीक है, इसका मैं डायगोनल ऑफ कर देता हूँ. ऐसे डायगोनल में ऑन ही रखता हूँ क्योंकि सब फिर सेम लगेगा. इसको मैं देख लेता हूँ अगर ये लाइट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. 1 मिनट. Roberto.
ओके ठीक है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हम जो भी चीज़ लगा रहे हैं वो उसका कोई पर्पस हो, वो बस ऐसी फ्लोट नहीं कर रही हो। ठीक है, my PC gets a bit heavy when I use both of these softwares at once, at one time. Okay, so अच्छा यहाँ देख रहे हैं ये X100 करना है। Yes, this is fine. ठीक है, और इसका मैं एंकर पॉइंट सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस कर रहा हूँ, और इसको फिर कर देते हैं लेट्स कॉल इट 25 में भी। ठीक है, और लेट्स जस्ट से कि वी नीड टू क्रिएट अ लाइन। I don't know, we have to try these things out to make it, you know, to see कि क्या चीज़ सही लग रही है क्या नहीं लग रही है सही। ठीक है, so let's do this। ठीक है, नीचे सही नहीं लग रहा है, so it's, you know, so uh, there's no one asking us कि नीचे कुछ नहीं लगाया या ऊपर कुछ नहीं लगाया। let's try things। ठीक है, ठीक है, I want the gradient to flow from here as well, तो ये भी डार्क हो यहाँ से। so let's just create a ramp। इसका डार्क एरिया में यहाँ रख देता हूँ, ब्राइट एरिया में यहाँ रख देता हूँ। You see, it is starting to look more better, I think। yeah, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ किया जा सकता है। so let's just duplicate it, put it here, swap colors। ठीक है, इसका वाइट यहाँ पर आ जाएगा, इसका ब्लैक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, and we don't really okay, so let's do this a bit here। मूव ही नहीं हो रहा, हो गया। You see, we can just इस तरह से इसका हम रोटेट एनिमेट भी कर सकते हैं पोजीशन की, बस अंदर जा रहा हो। so I really like this। मास्क इसका मैं ऑफ कर देता हूँ, एम प्रेस करने से मास्क आ जाता है बाय द वे। इसका जो डार्क एरिया है जस्ट मेक इट हियर, और इसका जो एक्स है वो यहाँ पे लगा दें। ठीक है, अच्छा मुझे लगता है 2 की जगह अब इसको 1 करके देखेंगे। दीज आर ऑल जस्ट टेस्टिंग फेज, राइट। ठीक है, सो मे बी इफ आई कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, यू प्रेस कर दूँ 2 बार, पाथ पर आऊँ, और इसको मैं सिर्फ उतना रखूँ जितना ये इसके करीब करीब है आई थिंक। ठीक है, ये भी मैं अपनी मर्जी से नहीं रोक रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं बता देता हूँ मैं किस हिसाब से रोक रहा हूँ कि ये जो ई का जो अपर पार्ट है वहाँ मैंने रोका है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसको तो और करीब ले आता हूँ। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी यू नो अलाइंड एंड मोर बैलेंस्ड। ठीक है, कंट्रोल आर से आ और जा सकता है ये रूलर वाला पार्ट।
X, I really don't think X लगाना कोई बहुत ज़रूरी काम है, but maybe maybe let's just do one thing. इसको मैं थोड़ा सा boxy look दे देता हूँ. Okay, इसको भी मैं थोड़ा सा boxy look दे देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा vertical हुआ हुआ है. Okay, I think this is fine for now. Okay, this shot looks fine for now. We can move forward from here. Ultra wide, maybe I will change the text right now. Right now, I don't feel like it. Feel like changing it. Yeah, let's just create one stroke here as well. Do. Path. Okay, so here. ठीक है, और इसमें जो शेप आ रहा है इसकी डार्कनेस पहले ख़त्म कर देते हैं बिकॉज ओके सो लेट्स जस्ट फिट इट कंट्रोल ए और ये बंद कर देते हैं. सो yeah, this frame looks fine for now. Let's just play around with the background a little. अच्छा, background के लिए I need to create the alpha of this thing. So अब यहाँ पर आकर मैं इसका alpha channel on करके इसका एक render निकाल लेता हूँ. Okay, so I think इतना enough होगा. और later on if I think कि मुझे कुछ change करना चाहिए composition के लिए तो I will definitely change it. Maybe in the next session I will just go back and forth a bit more and see how can we improve the overall composition, and we will also compare these frames with the pre-visual and the frames which we have in the pure reference thing. ठीक है? So first of all, let me just grab it, save as VO2 का mat. In CG we call these things जो कि अल्फा हमारा काट सकें उनको मैट कहते हैं. मैट बोर्ड. ठीक है, और इसको मैं मैट कर देता हूँ. So now we don't have, yeah, it looks nice. The background was a bit buggy. ठीक है, अल्ट्रा ये आ गया है हमारे पास और इसको मैं यहाँ से मास्क कर देता हूँ. फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर. ठीक है, और इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ. Okay, so now we don't really have much. Let's just use this background and see where it goes. So यहाँ पर आपके पास ये आ गया, इसके पास ये आ गया, अब से ये क्या है. ठीक है, अभी because I'm working on the background only, so I will just मैं इसको भी यहाँ से लॉक कर लेता हूँ ताकि मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँ तो मेरा इफेक्ट वही पैनल रहे और इसी लेयर का रहे. ओके, सो लेट्स वर्क ऑन इट. यहाँ पर आए और इसको देखा कि तो क्या कर सकते हैं. I want more. ठीक है, ये और इसको यहाँ पर ले आते हैं. ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट करता हूँ. लेट्स सी.
और ये जो डार्क है ये बहुत ज़्यादा डार्क है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, और मैं इसका स्कैटर बढ़ा देता हूँ। अच्छा, तो इसको भी मैं बहुत सटल सा नीचे ले आता हूँ। Okay, so right now it looks fine. It looks fine for now. इसका जो क्या कहते हैं, इसको मैं लॉक करता हूँ, इसका लॉक हटाता हूँ। इसका जो टेक्स्ट है, let's work on the text a bit more. ठीक है, अल्ट्रा इज फाइन। इसका जो ब्लैक एरिया है ना वो बस मैं बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दूंगा। इसी तरह इसका जो ब्लैक एरिया है मैं बैकग्राउंड से मर्ज कर दूंगा, so it doesn't look different, right? Okay, so it looks more connected to the background. And now let's tweak the settings of this whole frame. होल फ्रेम से मुराद ये है कि ये जो आपका PNG है एलिमेंट, दिस थिंग, द फोन इटसेल्फ। लेट्स सी क्या हो सकता है। कर्व्स, कंट्रोल स्पेस बार से ही FX कंसोल आ जाता है। I've already told you guys about that. Yeah, this looks better. अरे यार ये पता नहीं कर्व्स क्यों इतना मसला कर रहे हैं। ओके, सो इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब मैं ओवरऑल सबके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लगाता हूँ एंड आई विल जस्ट ट्राई टू ट्वीक दीज थिंग्स। अनशार्प मास्क, इससे एजेस शार्प हो जाते हैं, तो आई विल जस्ट डुप्लीकेट इट एंड सी के कितना मुझे चाहिए। आई थिंक दिस लुक्स फाइन। ये बहुत ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये रेंडर सही नहीं हुआ। ठीक है, रेंडर की क्वालिटी कम है तो वो मुझे दोबारा देखना होगा। तो फॉर नाउ लेट्स जस्ट पिक वन, एक काफ़ी है। ठीक है, और इसको यार ये भी सही नहीं लग रहा है क्योंकि वो रेंडर ही सही नहीं हुआ। सो लेट्स जस्ट, अगर अल्ट्रा शार्प लगाना ही है तो लेट्स सी कि मैं इसके टेक्स्ट पर ही लगा देता हूँ फॉर नाउ, बिकॉज टेक्स्ट पर मुझे अच्छा लग रहा है वो इफेक्ट। कहाँ लगा दिया मैंने? HD डिस्प्ले है कहाँ? पता नहीं, मैंने गलत टेक्स्ट पर लगा दिया। HD unsharp mask, duplicate it, duplicate it, duplicate it. No, I don't see anything. So maybe I will just need to create a layer जिसको मैं ऊपर रख दूँ अल्ट्रा और वाइट दोनों टेक्स्ट के। Now I will see the results. Okay, so इसमें एक बस प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ऊपर आई हुई, तो इनको मैं नीचे रख देना। ठीक है, so it doesn't affect the phone. Okay, this looks fine for now, I think. What can we do more? I think we can create some logos here and there, और यहाँ पर कुछ elements डाल दें lines के, but it's not really that important because I want to keep things very minimalistic as well. I don't want things to get more to get any messy. चीज़ें जितनी साफ सुथरी होंगी उतना सही लगेंगी। वन, और इसके ऊपर ग्लो डाल के देखते हैं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा कम भी कर देता हूँ। इट इज़ टू मच। Yeah, it does look fine for now. ठीक है, इसके लिए आप ये ऑन कर सकते हैं, टाइटल सेव एरिया में भी। ठीक है, बट अब मुझे ये बराबर चाहिए है जिससे सब, मे बी नॉट। इसको मैं थोड़ा सा क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ।
You see, it is starting to look more and more like an ad. Okay, ये जब मूव हो रहा होगा और जो टेक्स्ट वगैरह आ रहा होगा, it will look more better, it will look much better. So let's just get back to it a bit more and see how can we improve it further. So for now let's say कि अगर मुझे ये gradient background देखना है तो it looks fine. यहाँ पे black ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे grayish है, यहाँ पर थोड़ा सा glowy effect आ रहा है. अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पर ग्लो इफेक्ट आ रहा है, लेट जस्ट रिमूव देम. अगर आपने किसी लेयर पर से ग्लो इफेक्ट सिर्फ ख़त्म करने हैं तो यू कैन जस्ट सिंपली टर्न दीज ऑफ. तो उससे सिर्फ उसके इफेक्ट्स बंद हो जाएंगे, वो लेयर अपनी जगह रहेगी. सही है, तो दिस लुक्स फाइन. Okay, so I am going out of ideas right now because usually what happens, like when you are creating style frames like this, एक बार आपने अच्छा सा जितना मैक्सिमम आपसे हो सकता है बना लिया, then you go out, have it have have lunch, dinner, whatever you want to have, और फिर उसके बाद कल, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 घंटे बाद आके उसको फ्रेम को दोबारा देखें. एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक अच्छा, तो इसमें ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है और फिर ये इंप्रूवमेंट हो सकती है. बिकॉज वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट वन थिंग एंड जस्ट working on one thing the whole day, you start to get the hang of it and you don't see the flaws in it. Okay, that's why directors are there to help you guys, help you out, help the artist. You get to see the bigger picture of the shot, because once the artist is working on just one shot, he don't really see the whole film. Even if he knows about the whole film, he just can't be that much aware of the whole film. So just to give yourself a break and come back to it and see what you can do and what you can't do about it. Okay, so I think I will do the same thing and I will stop the recording and I will create another one video and let's see how can I improve this, because I think it is good. I don't think it's a bad composition. I think it's a good composition and we are on the right track, but I think there is still something missing, and I feel like once it is done, it will be more, it will be more better. Okay, so let's just get back to you. I will get back to you guys after after some rest. Thank you for watching this.